Hello. Hello. All right, I'm audible. All right. So I am Shriti Sharma, and these are my credentials here. Also, my referral code is Sharma ji. Now, before we get into the class, I would like to urge all of you, क्योंकि आज क्या हो गया 24th हो गया ना, so do make it a point to write the scholarship test on the 26th of January. Of course, you'll have more options. 6th of Feb and 13th of Feb को भी लिख सकते हैं. But go for it as soon as possible because here you will have a chance to win scholarships, right? And you can go for a subscription plan at 100% scholarship. So that would be a good thing. Apart from that, of course, it's a test curated by experts and you get detailed live analysis of it. You get an idea of where you stand in comparison with others. You get in-depth insights and you get test reports. The test is going to be at 6 p.m. and it's going to be a 1 hour test with 30 questions, so 2 minutes per question on an average. Also, do write CAP Combat on Sunday. All right, तो आज हमारा agenda है this reading comprehension जो हम आगे करेंगे. We will not start with it, ठीक है? क्योंकि the reason I've mentioned quite a few times. We will start with vocabulary. Vocab से शुरू करेंगे, fill in the blanks भी है, and then there's reading comprehension as well. So that's how it's going to be. I hope it's fine, Aman. Yeah, I saw there was a lag and there was some voice issue audio. Good afternoon, Arup. चलिए, तो ये है हमारा शब्द और हमको बताना है इसका मीनिंग और आपको लिखना भी है, ठीक है? सो कीप योर नोटबुक एंड पेन हैंडी सो दैट यू कीप राइटिंग. तो हमारा पहला वर्ड है डॉक्ट्रिन. विच वन इज इट? विच वन डू आई मार्क हियर? डॉक्ट्रिन क्या होता है? चलिए डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है? आप ऑफ कोर्स यू कैन राइट इन द चैट्स एज वेल. तो डॉक्ट्रिन होता है अ बिलीफ. किस तरह का बिलीफ? अ सेट बिलीफ इज अ डॉक्ट्रिन, ठीक है? अ सेट बिलीफ. I will make a sentence also because like I said, I mean with sentences you get an idea कि किस तरह से उस शब्द को यूज करना है. गुड आफ्टरनून समृता. तो डॉक्ट्रिन से हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? अ सेट बिलीफ. She doesn't follow or adhere to. She doesn't follow any religious doctrine. That means she does not really follow any set belief pertaining to any of the religions. ये एक सेंटेंस बन रहा है. रिलीजन के साथ डॉक्ट्रिन बहुत ज़्यादा यूज होता है. रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स आर द सेट बिलीव्स दैट एवरी रिलीजन हैज. ऑलराइट, तो ये ज़रूर लिख लीजिएगा सेंटेंस. यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू यूज इट. थोड़ा पर्सनली इस वर्ड को कम यूज करते हैं. अपने छोटे मोटे बिलीव्स के लिए इस वर्ड को कम ही यूज करते हैं. गुड आफ्टरनून वेदरी. ऑलराइट, फ्रॉम डॉक्ट्रिन there's another word, doctrinaire. So, doctrinaire is a person who is not willing to change his or her beliefs, is not flexible. You know, doctrinaire would be a kind of a person who sticks to, adheres to his or her beliefs and doesn't change. A synonym could be orthodox. One who adheres to is like sticks to. Hmm? Uh, Adheres to a doctrine and is not flexible, you know. It's not like you can convince this person to change his or her beliefs. Is not flexible. I'm giving you like an elaborate explanation of the word. A synonym for doctrinaire would be, I'm writing the synonym here, orthodox. Orthodox is a synonym. So please write it all down. सब कुछ लिखना है आपको. You don't have to just look at the word and mark the meaning. That's not our agenda. Our agenda is to be very clear with these words, how to use them. I think all of you can give me the answer of the second one. बताइए, for envious, what would be the meaning here out of the given options? Envious is similar to which word?
B, perfect. Dikshan, correct. Envious is jealous. Very good. The remaining words here are easy, so I'm not delving into them. Moving on, the third word is tedious. I hope you have written everything that I wrote here. If not, then you can check out the video later, pause it there, and write the things. It's very important to write the sentences, especially. Tedious क्या होता है? Tedious होता है tiresome and dull. All right. Yes, Aman, correct. Tedious is tiresome. Now, it has to be tiresome and dull. All right. Now, understand the difference. Sometimes, when I give sentences, I also tell you what is it not. मैं ये भी बताती हूँ कि ये क्या नहीं है. Apart from understanding ये क्या है, so that we don't get confused. तो देखिए, tedious is जो आपको थका दे, but at the same time, आपको मज़ा भी नहीं आता हो वो करने में. देखो, जैसे कि अगर मैं कहूँ, let us say if you know, I take 7 hours or 8 hours of continuous classes back to back, back to back, back to back. That can be tiring क्योंकि 8 घंटे लगातार बोलते बोलते थक जाते हैं. बट क्या वो मेरे लिए tedious होता है? नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए boring नहीं होता है. I love doing it, so it's not boring for me. So I cannot use the word tedious there. So what I'm trying to say is something that's your passion. If you like doing it, even if you do it for a very long time continuously and it tires you out, in that case you cannot use the word tedious. Tedious can be used when you're doing something, it tires you out and you also find it boring. That is when you can use the word. So I cannot use it for, even if I have 8 to 10 hours of continuous classes, I still cannot use the word tedious. I can use the word tiring. The day was tiring or the classes were tiring, but definitely not tedious. What would be tedious? Something that you don't enjoy. Maybe a subject that I don't enjoy. Doing that for longer hours would be tedious. Of course, मेरे साथ ऐसा होता नहीं है. When I was a student, then I could have given such an example. So ये याद रखिएगा. You guys can write an example of a task you don't enjoy doing, but still when you do them and you do them continuously for some time, you might get tired and you also find it boring. So maybe somebody can say, I find household chores to be tedious. Somebody might say that. Somebody might find studies to be tedious, depending on what your interests are, what do you like to do and don't like to do. All right, so आप अपना example लिख लीजिए, something that fits your, scheme of things. वो example लिखिएगा. All right. Okay, stance. The next one is stance. What should be the answer? Stance का मतलब क्या होता है? A stand that you have taken. Stance is your stand, your position. कोई issue अगर discuss हो रहा है and I ask you what is your stance on the issue, मतलब कि what stand are you taking? Like, are you supporting it? Are you against it? What are your beliefs for that particular issue? So that is what stance is. Stance is your position, not your vision. No, your position. कोई भी issue हो सकता है. मान लो global warming. ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं ग्लोबल मैंने पहले भी कहा था एक देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल हु से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है एंड ऑफ कोर्स मेजॉरिटी बिलीव कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ व्हाट इज योर स्टांस ऑन दिस इशू, व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज योर नॉलेज से. ऑलराइट, so stance is that position. Okay, before I move on to the next slide, can you tell me what is the meaning of persevering? I see the word persevere here. What is persevering? What does it mean? If you persevere in your efforts, that means you. Okay, I'm not getting any answer here. So persevere क्या होता है? If you persevere, that means you keep on going. You don't give up, right? आरूप ने लिखा है try to achieve something difficult. Yeah, persevere is ki, it's something to any kind of thing. You are trying to achieve it, and no matter what, you keep going. You don't give up. Persevering is like not giving up. So yes, maybe when you're trying to achieve something difficult, you keep on going. Even if you don't achieve that success early on, still you don't give up. You just keep doing it, right? Not giving up is persevering. Persevering is more not giving up. Huh?
I would not exactly write hard work here because hard work could be of two kinds. Some people work hard in sports. कि बहुत hard work किया, बहुत मेहनत किया. They achieve what they're supposed to achieve. Great. If they don't achieve, they give up. The perseverance will not be equal to hard work. Perseverance would be that hard work which is continuous. Whether there's success or failure, one doesn't give up. That is perseverance. All right. And there could be perseverance in anything. It could be perseverance in hard work. It could be perseverance in your pursuit of happiness. You're looking for happiness. You might persevere there. It might be perseverance in terms of meditation. तो अलग अलग चीजों के लिए हो सकता है perseverance. गिव अप नहीं करते हैं. मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो गिव अप नहीं कर रहे हैं. हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं तो गिव अप नहीं कर रहे हैं. कंटिन्यूअस अटेम्प्ट चल रहा है. हार्ड वर्क है तो गिव अप नहीं कर रहे हैं. कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क कर रहे हैं. दैट इज व्हाट perseverance is. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. कॉन्फिस्केट, क्या मतलब होता है इसका कॉन्फिस्केट का? चलिए, आई विल वेट फॉर अ बिट एंड see what you guys have to say about the word. Meanwhile, हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. Confiscate. Perfect, Arup. Correct. Confiscate is take away. Wonderful. Take away. Perfect. जब्त करना. All right. आप सब लिख सकते हैं. Yes, yes, Dikshant. To take away. हिंदी में कहते हैं जब्त करना. All right. English में एक और word है seize. So you can also write that down as a synonym. Seize. Yeah, to take away. For example, um, his license was confiscated. The police confiscated his license, because he jumped the signal and he tried to run away. So the police caught him and confiscated his license. मतलब जब्त कर लिया, seize कर लिया. What is the spelling of seize? SEIZE, that one. वो वाला seize. ठीक है. एक और बहुत अलग seize भी होता है. वो होता है CEASE. उसका मतलब that has a completely different meaning. All right. CEASE क्या होता है? It's like to stop. But SEIZE क्या होता है? जब्त करना, to take away. Why did I mention both of these here? Because they sound the same, है ना? उनका sound same है, इसलिए mention कर दिया साथ में. Yes, Dikshant. To stop is CEASE. Perfect. The next word is servile. Servile is, sir, इससे आप याद कर सकते हो. Servant like, slave like, but in what sense? Like a servant or like a slave, in what sense? What do you think? What could be the closest meaning here out of the given options? Servile क्या होता है? Excessively obedient to certain people. Like, देखो, obedient is a positive word. You might be an obedient child to your parents, but servile is थोड़ा negative. Okay, it's like this: excessively willing to please others. थोड़ा slave like हो जाता है, servant like हो जाता है, चमचे की तरह हो जाता है. हिंदी में जो चमचा कहते हैं. English में you can say like a toady, like a sycophant. Servant like, slave like. ये जरूर लिखिएगा. Excessively willing to please others. And the word has a negative connotation. It's not a positive word. देखो, to please someone could be positive, ठीक है? It can be neutral actually. If you want to please someone, it can be a neutral thing. कि depend करता है किस situation की बात हो रही है. But servile is excessively wanting and willing to please others. It is used in a negative way. ठीक है? It's a negative word. So जिसका feeling negative होता है उसको कहते हैं negative connotation. Connotation is the feeling attached to a word. Positive, negative, neutral, उसको कहते हैं connotation. Servile has a negative connotation. Not exactly attention seeking, not that. चमचे की तरह जो होता है ना, चमचा आप समझते हैं हिंदी में कहते हैं. इंग्लिश में उसको टोडी कहते हैं, सिकोफेंट कहते हैं, फ्लैटरर भी कहते हैं. तो उस तरह के लोगों को कहते हैं कि कोई पॉलिटिशियन को देखो, उसके आजू बाजू चमचे जो घूमते रहते हैं, तो देयर एटीट्यूड इज सर्वाइल. राइट.
अभी ये यूट्यूब है, सो आई कांट टेक एग्जांपल्स ऑफ नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज, नो, बट आई विल, मैं नाम तो नहीं लूंगी, बट हाँ, आप सोचिए पॉलिटिक्स में या मूवीज में कुछ ऐसे पर्सनालिटीज होते हैं जो कुछ ज्यादा ही अपने आप को क्या बोले, हाउ डू आई से इट so that it's diplomatic as well. That becomes very difficult. I mean, saying things directly is easier, no? अब diplomatic बना के बोलना बड़ा मुश्किल होता है. Some people who are like थोड़ा अपने आप को ज्यादा इन पोजिशन ऑफ पावर रखते हैं, एंड देन अदर्स आर लाइक कि हाँ, इनके गुड बुक्स में रहेंगे तो हमारा भी फायदा होगा. तो वो जो अदर्स हैं उनका एटीट्यूड इन लोगों के प्रति सर्वाइल हो जाता है. Maybe when we discuss the word on Unacademy platform, we can take explicit examples and names. आगे बढ़ते हैं. डिसेप्टिव. डिसेप्टिव इज मिसलीडिंग, जिससे धोखा हो या धोखा देने वाला भी हो सकता है. ऑलराइट, मिसलीडिंग इज डिसेप्टिव. इंस्टीट्यूट एज अ वर्ब. देखो, एज अ नाउन आप सबको इंस्टीट्यूट का मतलब पता है, बट एज अ वर्ब हम यहाँ पे बताते हैं क्योंकि नाउन वाला ऑप्शन ही नहीं है यहाँ. इंस्टीट्यूट इज टू स्टैब्लिश. ऑलराइट, institute is to start, to establish. Yes, Rajat, institute is to establish. Perfect. और नेक्स्ट का आंसर बताइए. स्लीक. Rajat has given an answer for the 10th one. So give an example. Ki when do we use it? Arup has also given an answer. And both the answers are correct. Sleek का मतलब होता है smooth. So it's like smooth and shiny. Uh, where have you heard of the word, or in what context do we hear it frequently? Frequently हम कब सुनते हैं ये? कहाँ देखने को मिलता है? किन चीजों के लिए sleek? Smooth and shiny. He lies in a sleep. देखिए, चीज़ों के लिए बहुत यूज़ करते हैं. हाँ, बहुत बार आप मोबाइल फ़ोन्स के ऐड में भी देखोगे. आपका मोबाइल फ़ोन काफ़ी स्मूथ है, शाइनी है. कंफ्यूजन के लिए शार्प भी लिखा है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, शार्प इज़ एक्चुअली नॉट द मीनिंग. पर ज़्यादातर चीज़ें जो बहुत स्मार्ट सी, स्मूथ एंड शाइनी दिखती है, उनको स्लीक कहते हैं. तो एक एग्जांपल हो गया फ़ोन्स. कोई भी फ़ोन नहीं, ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी स्मूथ एंड शाइनी. उसके अलावा कुछ कार्स होते हैं, उनके लिए भी यूज होता है. ऑलराइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स यूज्ड इवन फॉर हेयर. व्हेन इट्स स्मूथ एंड शाइनी, स्लीक हेयर. ऑलराइट. और मे बी जेल के लिए यूज होता है, दैट अ पर्टिकुलर जेल विल मेक योर हेयर लुक स्लीक. तो इस तरह से भी यूज होता है. ऑलराइट. So you can write on some of these examples, like for gadgets के लिए बहुत use होता है. If you're trying to show that those gadgets are attractive, then the word sleek is used frequently. So you can write gadgets. Gadgets में आपका phone on सब आ जाएगा. Vehicles के लिए, cars के लिए बहुत use होता है ये. Alright. हाँ, कभी कभी dress के लिए भी use होता है. Yes. Arup has written that here. Alright. चलिए आगे देखते हैं. अब काफी, I think some of these words are going to be difficult. So ये fill in the blanks देखेंगे, उसके बाद we will do read and comprehension. But for this one, I'm going to give you more time. The previous questions I was doing pretty fast, directly, word meaning, word meaning, word meaning, word meaning. अब थोड़ा time देंगे. I want all of you to analyze, then we will answer. Okay, चलिए. Sentence पहले पढ़िए. Because of Dodgson's complicity in the conspiracy. Conspiracy क्या होता है? साजिश, right? Planning, plotting. Complicity and conspiracy matlab he was involved in the conspiracy. If you're complicit, that means you're a part of it. Because of Dirkson's complicity in the conspiracy, many historians have insisted that he is as dash as the actual assassin. Assassin is the killer, right? However, however shows contradiction. However, recent evidence has suggested that Dirkson was not part of the conspiracy which would dash him.
Reprehensible is deserving of punishment. Hello, Himanshu. So, reprehensible is something that should be punished, something that should be criticized, something which is wrong. All right. Okay. I had been waiting for the ring, the circle to stop moving. Okay. So, like we discussed, reprehensible is somebody or somebody deserving punishment. Somebody has done something wrong. That was a reprehensible act. Should have been punished. Punished. Condemn is to criticize harshly or to disapprove of. If you condemn somebody's action, you disapprove of their action. Licentious is one who is morally or ethically uncontrolled, unrestrained in their behavior. Um, absolve is to free from blame. मतलब अच्छा पाप धुल गए, that is absolve. Culpable हम discuss करते हैं. Bhavesh, the schedule of live classes is at 2 p.m. and then it's at 11 p.m. mostly. But tonight at 11 p.m. we don't have a live class. Tonight at 11 p.m. we have a special class on Unacademy, free special class. Okay, absolve होता है पाप का धुलना या blame से मुक्त करना, to free from blame. Culpable. Now, CULP or CULPA as a root means culpa, as a root means blame. इससे दूसरे जो related words है, we will do them once we are done with this question. So, culpable का मतलब होता है blameable or blameworthy. All right, one who should be blamed, one who can be blamed. So, culpable is blameable or blameworthy. Pristine is like pure, untouched, that kind of pure. All right, vertiginous, like I've written here, is one meaning is spinning or rotating. That's one meaning. Vertiginous का और भी meaning होता है, rotating, yeah. और भी meaning होता है vertiginous का. Vertigo होता है ना? I mean, some people have vertigo. When you go to a greater height and you look down, you feel dizzy. So, something that causes vertigo is also vertiginous. वो भी आप लिख सकते हैं. All right, so even that is the meaning of vertiginous. अब मैंने right side के बहुत सारे words का meaning नहीं लिखा है क्योंकि वो synonyms हैं. Absolve, exonerate, exculpate, vindicate are synonyms. All of them mean to free from blame or to prove innocent. All right. देखिए कल्पा हुआ ना blame, तो exculpate हुआ blame को हटाना. Blame को हटाना. All right. Free from blame. Free from blame. That means exculpate is to prove innocent. Exonerate is also the same and vindicate is the same. All of them mean free from blame. A few of you have got, Simran has mentioned that it's C, Deepak is saying C, Rajat is saying C. What about the rest of you? What should be the answer? इन चारों का मीनिंग हो गया to free from blame or to prove innocent. So अब सेंटेंस देखना है हमको. Because of Dawson's complicity in the conspiracy, कि हाँ वो involved था conspiracy में, many historians have insisted that he is dash as the actual assassin, क्योंकि वो conspiracy में involved था. तो बहुत historians का कहना है कि वो भी he should also be blamed, right? He was also in the wrong. He was as blamable, as blameworthy as the actual assassin. But आता है, however, which shows contradiction. However, recent evidence has suggested that he was not part of the conspiracy, which would prove him to be innocent or which would free him from the blame. Right? So, yes, I think three of you have given the answer. The answer is C, culpable and exonerate. So, जैसा हमने discuss किया, the word culpa, the root culpa is blame.
उससे आपको दो वर्ड्स यहाँ मिले, एक culpable मिला, एक exculpate मिला. Culpable is blamable or blameworthy. Exculpate is to prove innocent, to free from blame, बाइज्जत बरी करना. और क्या वर्ड्स है कल्पा से? There is a word, a phrase actually, mea culpa. That means, it means I am wrong. I am to be blamed. Accepting your guilt. You can accept your guilt by saying mea culpa, मेरी गलती. I am to be blamed. मेरी गलती, it means. Alright. Then there's another word, inculpate, which also means to blame or to accuse. Inculpate भी लिख लीजिए, it means blame or accuse. Inculpate means to blame or to accuse. Okay, was just waiting for you guys to write it down. All right, second देखते हैं. To many outside observers, the dictator's fall from power was surprisingly dash. Okay. फिर आता है on the other hand. On the other hand would also show some contrast. When one considers how long his reign lasted, reign is the rule, the period of rule. The downfall could not have come soon enough. So you need to understand the context of the sentence and then answer. मैं मीनिंग्स बता देती हूँ, फिर आपको आंसर बताना है. ऑलराइट. ऑडेशियस हमने काफी बार डिस्कस किया है, यहाँ पे भी काफी बार डिस्कस किया है. ऑडेशियस क्या है? बोल्ड, शेमलेसली बोल्ड. लेथार्जिक इज वैसे ऑडेशियस बहुत बार किया है. इट्स नॉट यूज्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे. ब्रेव की तरह यूज नहीं होता है, बोल्ड की तरह यूज होता है. ऑलराइट. लेथार्जिक इज लेजी. इट ऑल्सो मीन्स वेरी स्लो. तो दोनों लिख लेते हैं, लेजी और वेरी स्लो. कर्सरी वी डिड लास्ट वीक. कर्सरी का मतलब होता है कैजुअल. जैसे कि ही गेव अ कर्सरी ग्लांस टू द नोट्स, मतलब कैजुअली देख लिया नोट्स को. जस्ट बिफोर द एग्जाम ही गेव अ कर्सरी ग्लांस. तो इट्स कैजुअल. इट्स ऑल्सो हेस्टी. जल्दी से देख लिया नोट्स, पूरा डिटेल में नहीं देखा. ऑलराइट. एब्सोल्यूट तो आपको पता है, एब्सोल्यूट इज लाइक कंप्लीट विथ फाइनैलिटी, कि हाँ total. That's absolute. All of you know the meaning of absolute. And precipitate is suddenly, very quick, very sudden. That's extremely sudden. Achanak. That's what it is. So बताइए, what should be the answer, the second one? Okay, Raghav is saying it should be E, precipitate, sudden. All right. What about the rest of you?
Only one answer. तो सही है ना? To many outside observers, the dictator's fall from power was surprisingly dash. On the other hand, when one considered how long his reign lasted, तो फिर लिखा है but as a contrast जब हम कंसिडर करें कि कितना लंबा उसका रूल चला, तब तो मतलब downfall could not have come soon enough. मतलब it kind of means कि ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हुआ downfall. बट ये ऑन द अदर हैंड के बाद है कि बहुत लंबा चला, तो कुछ लोगों को लगा कि अरे बहुत सडनली और बहुत क्विकली उसका डाउनफॉल हुआ, पर ऑन द अदर हैंड व्हेन यू कंसिडर कि कितना लंबा चला उसका रूल, तो इट वाजंट सडन इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. सो यू आर राइट, इट शुड बी वाज सरप्राइजिंगली सडन, वाज सरप्राइजिंगली precipitate. Yes, E is the correct answer. And precipitate can be used as an adjective, which is which it is being used as here. It is being used as an adjective. It can also be used as a verb, depending on the context. यहाँ पे ये और ये noun की तरह भी use होता है, ठीक है? This word precipitate can be used as noun, verb, and adjective. Your answer is E. Good afternoon, Tanmay. All right, the next one. बताइए. Okay, Democrat. Okay. अच्छा, आपने second का answer दिया है. What's your name? All right. Yeah, second का answer E है, correct. Raghav, you're answering the third one, same. All right, देखिए यहाँ पे भी एक you have to pay attention to this. Though the endocrinologist was terse, हालांकि वो terse था when it came to meeting his with patients. Terse मतलब he did not speak much, to the point, did not use a lot of words. When it came to meeting with patients, he was dash when he was around friends and family. दो आया है यानी कि dash में you need a word which is the opposite of terse. Terse is one who speaks less, तो आपको एक opposite चाहिए. Yes, तन्मय, तो एक shadow answer हो सकता है talkative. Talkative का synonym आपको ढूंढना है यहाँ पे. चलिए देखते हैं. दो से हमको पता चल रहा है. दो kind of gives us a hint. What is the word for talkative? Okay, चलिए. पहला word जो है आपका brusque. What does it mean? This also means curt. Curt as in terse only, huh? Just being to the point. Bombastic is showy, using very showy language. In terms of speech, if you're bombastic, you're showy. Showing off, using high flying language or using big words. ये पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोगों को लिखना है ये, ठीक है? बस मैंने शोई लिखा तो शोई लिख के मत छोड़ो, मतलब पूरा लिखो कि bombastic is somebody who would be using high flying language, high sounding words. All right. Bombastic speech, बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया. प्रोलिक्स में भी होता है कि हम बहुत शब्द यूज कर रहे हैं, बट इसका मीनिंग आप लिखिए स्पीकिंग एट tedious length. If you remember, just a while back we did the meaning of tedious. देखिए यहाँ पे आपने किया था. Where did it go? Tedious, tiresome and dull. तो
prolix हो जाएगा कि one who uses too many words to convey an idea that it gets tedious, वो है prolix. ठीक है, बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करें तो लिखिए स्पीकिंग एट लेंथ केवल नहीं, स्पीकिंग एट लेंथ मतलब लंबा बोलना, ज़्यादा बोलना. स्पीकिंग एट tedious length is prolix. What is the meaning of sententious? बताइए, what is the meaning of sententious? What do you think? Any idea? Sententious का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैं क्यों पूछ रही हूँ सेंटेंशियस का मतलब, इतना क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि देख के लगता है कि इट हैज समथिंग टू डू विद सेंटेंस, नो, बट नहीं, ऐसा नहीं है. आई मीन ऑफ कोर्स इट हैज समथिंग टू डू विद लैंग्वेज, बट इट हैज नथिंग टू डू विद मेकिंग सेंटेंसेस एंड स्टफ लाइक दैट. सेंटेंशियस का मतलब होता है एक्चुअली शॉर्ट ओनली. आई मीन टर्स, पिथी, PITHY. मैं आपको पिथी का मतलब बताऊंगी. एंड मॉरलाइजिंग. पहले इतना लिख लीजिए, देन आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन. पहले इतना लिखिए सेंटेंशियस के लिए. या देख के लगता है कि सेंटेंशियस का मतलब होगा जैसे बहुत सेंटेंस यूज करे, देख के लगता है, but that's not really the meaning. So I've written the meaning. You guys please write it down. Then we will discuss जो मैंने meaning लिखा है. Pithy and moralizing का मतलब क्या है? It's not pity ना, it's pithy. Pithy का मतलब short ही होता है. A pithy statement is actually a short statement, or in a very something which is expressed in a very clear way to the point. बट दैट डजंट मीन कि सेंटेंशियस इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. ये पिथी तो है बट मॉरलाइजिंग भी है, तो ये केवल एक पिथी स्टेटमेंट नहीं है, ये मॉरलाइजिंग है, मतलब सामने वाले को ज्ञान दे रहे हैं. तो सेंटेंशियल ज्ञान बांटना होता है ना, ज्ञान आप, इट्स नॉट लाइक प्रॉपर पढ़ाई वाला ज्ञान, लाइक ओ ये करना सही है, तुमको लाइफ में ऐसा करना चाहिए, उस तरह का ज्ञान, लेक्चर जो पिलाना होता है ना, तो दैट काइंड ऑफ ज्ञान. बट सेंटेंशियस इज दैट ज्ञान विच इज पिथी टू द पॉइंट. Like Hitler used to be sententious. Like he would give a lot of gyan to his followers, and he would moralize them, as in what is, he would kind of dictate what is morally right and what is morally wrong. So the word can be used in a very negative way as well. That's the point. All right. अब हम और पिथी एक अलग, पिथी is a different word and pity is a different word. Okay, don't get confused between the two. Pity होता है sympathy, right? Kind of. But यहाँ पे here it's not pity, it is pithy, PITHY. Direct, to the point. And the last word is loquacious, which means talkative. So let's see how many of you got the right answer. Loquacious is talkative, and that is our answer. Yes, Rajat. Loquacious. Tanmay, right? Yeah, the answer is loquacious. Loquacious is talkative. Terse is to the point. Okay. LOQ पे आए, talkative पे आए, तो इससे related दूसरे words बताइए. Loquacious, LOQ. Relates to speak or talk. Ramalinga Swami. Yes, the vocabulary part is useful for IP math. Definitely so. Definitely. Very useful. Even the level of reading comprehension that we are doing right now is useful for IP math. This level of reading comprehension would gradually increase. It would become more and more difficult. Then it would be more useful only for CAT. But right now, the level has not become that difficult because, I mean, the students who are preparing for CAT 2022, right? I mean, they have also started a while back. So that is why the RC level is not that difficult. Right now, the RC level is same as what you get at IP Math. But vocab is going to be always relevant for IP Math as well. So this root, LOC, LOQ is speak or talk. What are the words? Okay, Rajat has written taciturn.
So Rajat, taciturn would relate to terse, right? Taciturn is somebody who does not speak a lot, whereas garrulous is somebody who speaks a lot. Garrulous is talkative. Okay, loquacious is one who talks a lot, so talkative. Oh, other words. Tell me the other words with LOC, LOQ, which we have done about 5 million times by now. What are those words? Which have, they don't just have LOC, LOQ, they also relate to talking or speaking. What are those words? Eloquent. Tell me the meaning. I'm writing the word here. Eloquent. What does that mean? Circumloquent or circumlocution. What does that mean? All right, Tanmay has given us a sentence with prolix. Every lecture by, all right, Mr. Gupta gets prolix and boring. So yes, that would be a that would be correct usage of prolix. Yeah, soliloquy. Okay, so eloquent is one who speaks well, right? An elegant speaker, a fluent speaker, right? Eloquent is one who speaks fluently, one who speaks well. I mean, of course, uh, the example that comes to everybody's mind when we discuss eloquent is Shashi Tharoor is eloquent, right? I mean, there are many speakers these days. You get a lot of these great TED talks that you listen to, and they have great, brilliant speakers, eloquent people who are able to aptly express their ideas in perfect words. So, eloquence is that quality when you do have the right words for the ideas that come to your mind and you do it with fluency without any fillers, not using too many, not doing that. That makes you eloquent. Circumlocution has circum, like circumference. So, like this. So, one who speaks like this goes round and round in circles and doesn't come to the point. That person would be circumloquent, but that thing of speaking in circles and not coming to the point is circumlocution. Circumlocution is to speak or to talk in a roundabout manner, not coming directly to the point. Beating about the bush or beating around the bush. Now that you have written soliloquy, SOL relates to being alone. So soliloquy is like speaking to oneself or just standing on stage and you are speaking, nobody else is interacting with you. That's a soliloquy. SOL is like alone, right? Speaking to, speaking with or talking to oneself. Speaking with or talking to oneself. अकेले में बात करना is soliloquy. अकेले का speech is soliloquy. SOL is alone. If you remember, we just did this word bombastic. In terms of speech, bombastic is showy, right? Using big or high sounding words. So for bombastic, synonym would be grandiloquent or magniloquent. All right. उसके लिए उसमें भी LOQ आया है. So for bombastic, I hope you guys have written these down. We are still on LOQ and LOC as the root. यहाँ पे देखिए bombastic जो था showy in terms of speech उसके लिए आप लिख सकते हो grandiloquent or magniloquent. Showy speech, big words. All right. Then yes, what you have written here, somniloquy. Somniloquy is SOMN relates to sleep. So somniloquy हो गया नींद में बोलना, नींद में बड़बड़ाना, talking while asleep. Right? That's somniloquy. I was watching his or her somniloquy while he or she was asleep. Right. Or listening to his or her somniloquy. So SOMN is related to sleep.
Let's move on to the next question. The fourth one. Try it out. Quite a few words for you to learn here. What do you think? What should be the answer? Okay, two of you have given an answer. All right, देखिए. After his death, his neighbors recall that the curmudgeon never tried to socialize. So ये तो हमको समझ आ रहा है. This is a person who did not socialize. But what is the meaning of curmudgeon? Curmudgeon is a negative word. It means somebody who is irritable, unfriendly. तो ये एक negative word है. हाँ. आगे लिखा है thus. They were shocked to learn that the habitually dash old man, person who did not like to socialize or was unfriendly, was once a great movie star. Habitually, person, यहाँ पे blank में ऐसा ही कुछ चाहिए ना, habitually unfriendly old man or somebody who doesn't like to socialize. So you guys are right. आपने लिखा है be asocial is one who doesn't like to socialize, one who is unfriendly, one who does not, and it's a negative word. Hmm. अब देखिए, introverted क्यों नहीं होगा? Because introvert is also somebody who might not like to interact with people, but introvert does not have a negative connotation. और curmudgeon से हमको समझ आ रहा है कि this person, I mean, whosoever the person was, had now become, kind of चिड़चिड़ा सा, उस तरह का unfriendly. तो एक negative word चाहिए था. इसलिए आंसर ए नहीं है. पहले भी मैंने आज डिस्कस किया कि connotation, apart from the meaning, the connotation of the word is also very important. कि negative है, positive है, neutral है. So A is rejected because of connotation. Otherwise, of course, introvert is also somebody who doesn't like to socialize a lot, but still that's not the answer. In fact, hermetic देखिए D, इसका भी मतलब होता है one who is reclusive. That means like a hermit, one who doesn't socialize. Like a hermit मतलब जो हम पढ़ते थे, okay, like a hermit जो हम पढ़ते थे, साधु संत टाइप के लोग जो हिमालय पे जाके मे बी दे आर मेडिटेटिंग, दोस काइंड ऑफ पीपल आर हर्मिट्स. तो वहां से आपका एमेटिक वर्ड आया, हर्मिट भी कहते हैं. तो रिक्लूसिव, तो अलोन इन दैट रिगार्ड बट नॉट रियली नेगेटिव. एंड convivial is friendly. So of course that cannot be the answer. So yeah, your answer is B. Now the meaning of the word cynical. Cynical is one who doubts everybody's intentions. जो सबके इरादों पे शक करे. Cynical is one who doubts everybody's intention, one who feels that nobody could be selfless. That kind of a person is a cynic. Everybody's or everyone's intention. One who feels that nobody could be selfless. कोई भला भी करने आता है, उस पर भी डाउट करता है cynic.
All right, that's what a cynic is about. Okay, the next one. Because the executive burned all his incriminating files. Incriminating files are the files जो उसको actually फंसा सकता था. It is impossible to know exactly what information they contained. Nevertheless, it is not hard to dash what was in the files. And if one and if nothing else, the arson suggests culpability. Arson is that act, that crime of burning it all. Arson is the crime. वो उसने जो जलाया ना तो वो जलाने के क्राइम को कहते हैं आर्सन. कभी बिल्डिंग को जलाया या हट को जलाया या शॉप को जलाया यहाँ पे फाइल्स को जलाया दैट क्राइम इज आर्सन. एंड कल्पेबिलिटी तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कल्पेबल इज ब्लेमेबल सो कल्पेबिलिटी इज ब्लेमेबिलिटी. ऑलराइट. सो it is not hard to dash what is in the files because arson suggests culpability मतलब कुछ तो गलत था. So yeah, it is not hard to dash. You can put in a shadow answer. Yeah, you're right. Guess would be a shadow answer. Perfect. Yes, it is not hard to guess. तो आंसर बताइए. All right. Perfect. Very good. Infer. क्योंकि यहाँ पे it is not hard to figure out, right? Hard to guess or derive or figure out. कैसे figure out किया कि जलाया है यानी कि कुछ तो गड़बड़ था, right? So yes. किस तरह का गेस है ये? डिराइव करने वाला गेस है, फिगर आउट करने वाला गेस है, डिड्यूस करने वाला गेस, उस तरीके का गेस. अच्छा, ये बी क्यों नहीं है? क्योंकि ये इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट द इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या होगा. इसलिए आंसर बी नहीं है, ऑगर नहीं है. ऑगर का मतलब लिखिए टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. आई डोंट हैव स्पेस टू राइट हियर, so yeah, maybe I should erase some stuff. ऑगर का मतलब लिखिए टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर यूजिंग साइंस एंड ओमेन्स. To predict the future using science, omens or other mysticism. अभी मैं क्या मतलब सुपरस्टिशन में मुझे याद नहीं आ रहा है बट मान लीजिए यू गाइस स्टार्टेड अ बिजनेस. ठीक है, आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और पहले दिन कुछ कुछ एक अच्छा हिंट आपको मिलता है. कुछ सुपरस्टिशियस कोई चीज बताइए जो पॉजिटिव हो. कुछ हुआ मतलब कुछ. आई एम नॉट एबल टू फिल्म दैट कुछ दैट यू गाइस विल हैव टू टेल मी. और वो हुआ ना तो यू माइट से ओह दिस ऑगर्स वेल फॉर आवर बिजनेस. तो इस तरह का सेंटेंस बन सकता है. मतलब आई डोंट वांट टू गिव अ नेगेटिव वन. नेगेटिव सुपरस्टिशन में आई नो कि नेगेटिव में क्या क्या आता है. पॉजिटिव में नहीं पता क्या आएगा. वे यू कैन से ओ दिस ऑगर्स वेल फॉर अस. अ साइन दैट विल लीड टू गुड थिंग. इट्स मोर ऑफ अ सुपरस्टिशियस काइंड ऑफ अ थिंग. क्या यूज कर सकते हो बताइए. कहाँ पे कैसे है क्या क्या होगा दैट विल ऑगर वेल फॉर यू. लाइक दैट विल एक्ट एज अ पॉजिटिव साइन फॉर यू. Seeing a peacock is considered good omen is what Tanmay is saying. All right, तो ठीक है. आप लोगों ने बिजनेस शुरू किया और उस दिन आपके जहाँ पे भी let us say you started a warehouse or something और उसके अराउंड पिकॉक्स आ गए हैं, पीकॉक्स आ गए हैं. And these might say, oh wow, peacock sighting. This will augur well for the business. So that's how you use it. Sentence में कैसे डालते हैं? That's what I wanted to tell you. Perfect. Confound is to puzzle, to perplex as a verb. दिमाग घुमा देना. Perplex, P-L-E-X.
I was confounded would be I was puzzled. ऐसा क्यों हुआ? I was perplexed. Hmm. If you know somebody and their behavior changes all the time, so you might say his or her behavior confounds me. Because one day she was extremely friendly, next day she was not talking to me. So her behavior confounds me. All right. To glean is again a verb. So glean का मतलब लिखिए. To glean is to slowly gather information. To slowly gather information. To find out slowly. To learn slowly. To slowly gather information or to learn or find out slowly. To find out or learn slowly. Cognize is to know. Cognizant is knowing. Huh? Cognize is to know. Recognize होता है ना, इसका भी रूट सेम है. Cognize is to know. Cognizant, recognize in सब में same root आता है related to knowing. K-N-O-W, जानना. चलिए, hoping that all of you have written all the meanings here, and we are moving on to the last in the set of fill in the blanks. After that, we are going to look at reading comprehension. The speech's purpose was to dash popular support for referendum 82, but ironically it dashed it. यानी क्या है? Ironically यानी कि कुछ contradict और but भी आया है, कुछ opposite words आएंगे. So maybe among the options you can just look for the opposite word if you know the meaning. Okay, Tanmay is saying an example for glean. So I'm going back to glean that we discussed. The reporter was trying to glean as much inside information through the interview as he could. तो एक रिपोर्टर कोई इंटरव्यू ले रहा है किसी से, हाँ, और उसको उस इंडस्ट्री का इनसाइड इंफॉर्मेशन चाहिए, हाँ, अंदर क्या चलता है. तो इफ यू ट्राइंग टू ग्लीन ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, धीरे धीरे गैदर कर रहा है. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पूछ रहा है कि अरे आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, अरे आपकी इंडस्ट्री में ड्रग्स चलते हैं क्या. ऐसे नहीं. ग्लीन कर रहे हैं मतलब धीरे धीरे, डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्टली अलग अलग क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ hints डाल रहा है, and through that he or she is trying to gather that information slowly. That's gleaning. So the reporter was trying to glean as much inside information about the industry through the interview as he or she could. Cognitive and cognize are synonyms, you're saying? Raghav, the only reason why they're not synonyms is because they have different parts of speech. बस ये reason है. Basic meaning दोनों का एकदम ही सही similar है. बट कॉग्निटिव एक एडजेक्टिव होता है और कॉग्नाइज एडजेक्टिव नहीं होता है, इसलिए सिनोनिम्स नहीं है. क्योंकि सिनोनिम में वर्ड का मीनिंग तो सेम या सिमिलर होना चाहिए और पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम होना चाहिए. कि एडजेक्टिव है तो दोनों को एडजेक्टिव होना चाहिए. So for that reason they are not synonyms. Otherwise, yeah, the base meaning is the same. Sixth में हमारे जो words हैं, good morning Ram Bhatt. Okay, sixth में I see that we have got two options. अच्छा, पहले words हम डिस्कस कर लेते हैं. You guys can tell me the answer. Suppress का मतलब I think many of you know, दबाना. So it's to English में लिखे तो it would be repress or subdue. दबाना. For example, it's not good to suppress your emotions. अपने emotions दबा के रखना अच्छी बात नहीं है. It's not good for your health. So it's not good for your mental health. Suppressing your emotions is not good for your mental health. Alright. Abate का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना, the rainfall has abated or the storm has abated. इसका मतलब reduce. Abate is reduce. Past tense में reduced हो जाएगा. Example लिख लीजिए. The rainfall has abated. Right. The rainfall has मतलब कम हो गया, बारिश कम हो गई है. अब उसको कैसे बोलोगे? तो abated बोलोगे. ठीक है. Refi is
basically to convert something into a tangible, convert into a concrete thing or a tangible thing. It's also a verb. To convert into something concrete. Invigorate is to energize, refresh. लिख लीजिए हाँ इनविगरेट अभी इसको मैं क्या लिखूँ आप लोग भी लिख लीजिए ना इनविगरेट क्या होता है एनर्जाइज रिफ्रेश है ना कि Tom was very tired but he felt invigorated after his cup of coffee or after his cup of tea or after his bath, his shower. He felt invigorated, energized, refreshed. ठीक है C है आपका quell. Quell is also to suppress or to subdue. Quell is QUELL. Again, लिख लीजिएगा to suppress यही है और subdue. ठीक है bolster is to support or to reinforce. Bolster is support or reinforce. Quell is suppress or subdue. रोक देना था दबा देना. Yes, Tanmay has given a synonym for invigorate, which is rejuvenate. Perfect. Rejuvenate, refreshed. Correct. Abrogate होता है किसी चीज को abolish करना, खत्म करना by authority. It's more of a like, of course you abolish it, but not in an informal way. No, abolish by authority. तो किसी अथॉरिटी ने कोई एक सिस्टम को अबॉलिश किया खत्म किया या फिर कोई एक प्रैक्टिस को खत्म किया तो दैट इज एब्रोगेट vitiate also pronounced as vitiate means to reduce in effectiveness as in to weaken all right to reduce in effectiveness यानी कि कमजोर करना पूरा लिख देते हैं to reduce in effectiveness अब किसी चीज को विटिएट किया या विशिएट किया मतलब उसका इफेक्टिवनेस कम कर दिया तो वीकन कर दिया ये जो है rejuvenate is again refresh and corroborate is to support with evidence support with evidence so these are all the meanings अब आपकी बारी है आंसर बताना है 2 of you had earlier given an answer what about the rest of you मीनिंग सारे पता है आंसर बताइए बहुत ही ये भी पता है कि हमको ब्लैंक्स में ऑपोजिट्स चाहिए तो बचा ही क्या कोई स्पीच somebody presented a speech है ना उस स्पीच का पर्पस था टू डैश पॉपुलर सपोर्ट फॉर अ रेफरेंडम उस रेफरेंडम के लिए पॉपुलर सपोर्ट को कुछ करना चाहते थे वो बट उसका उल्टा हो गया तो अगर हम ए देखें वो उसके लिए पॉपुलर सपोर्ट को दबाना चाहते थे पर पॉपुलर सपोर्ट कम हो गया तो ये ऑपोजिट नहीं है ना अगर वो पॉपुलर सपोर्ट को दबाना चाहते थे दबा रहे तो सच में कम ही होगा ना तो ए नहीं होगा राइट अब दूसरा देखिए स्पीच का पर्पस था टू रीफाई पॉपुलर सपोर्ट
Reify popular support is to make the popular support more concrete. ये थोड़ा सा weird हो जा रहा है. If something is made more concrete, it becomes tangible. मतलब देखो यार, आप abstract ideas को concrete बनाते हो ना. Popular support already है, अभी उसको क्या concrete बनाओगे? दूसरी बात ये, अगर मान लो, ठीक है, मान लो अगर भी होता भी, तो अगर आप पॉपुलर सपोर्ट को कॉन्क्रीट बना रहे हो, यानी कि और उसको पुख्ता कर रहे हो, पर वो रिफ्रेश हो गया, तो ये भी तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो बी भी नहीं हो सकता है. आ, नहीं तन्मय, reinforce is not a synonym of reify. Reify is like let me think. He is able to reify his philosophy through words. So he is able to make his philosophy more concrete with the help of words. तो वही, कोई चीज जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको हम कॉन्क्रीट बनाते हैं, दैट एक्शन इज रेफाइंग. तो आपका फिलोसफी है, जो कि डेफिनेटली आपकी फिलोसफी है, आपके दिमाग में, उसको आप और कॉन्क्रीट बनाते हो थ्रू योर शब्द, थ्रू योर वर्ड्स. तो बी नहीं है, सी देखते हैं. द स्पीचेस पर्पस वाज टू क्वेल पॉपुलर सपोर्ट, यानी पॉपुलर सपोर्ट दबाना चाहता था, खत्म करना चाहता था, पर उल्टा वो पॉपुलर सपोर्ट को और रीइंफोर्स कर दिया और स्ट्रॉन्ग बना दिया. बोल्स्टर इज टू सपोर्ट, नो? तो आप किसी चीज को बोल्स्टर कर रहे हो तो और सपोर्ट दे रहे हो और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो और रीइंफोर्स कर रहे हो, लिखा भी था हमने. तो सी इज एन ऑप्शन वेयर वी हैव ऑपोजिट. सो यस, 3 of you डिड मार्क सी. इट कुड बी द आंसर. दूसरे भी ऑप्शंस देख लेते हैं. द स्पीच का पर्पस था टू अबॉलिश पॉपुलर सपोर्ट, बट पर वो वीकन किया. देखो, ऑपोजिट बिल्कुल नहीं है. स्पीच का पर्पस था टू रिफ्रेश पॉपुलर सपोर्ट, पर वो सपोर्ट किया, तो ई भी, दे आर नॉट ऑपोजिट्स. सो द परफेक्ट आंसर इज सी. सी इज योर आंसर. किसी को डाउट हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्या डाउट, जो भी डाउट है. बोल्स्टर और कैसे यूज हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, यार, आई नीड टू बोल्स्टर माई आर्ग्यूमेंट विथ मोर एविडेंस. तो मान लीजिए मैंने एक आर्ग्यूमेंट पेश किया है, एक स्टैंड लिया है, एंड आई एम लाइक, आई वांट टू बोल्स्टर इट, मतलब आई वांट टू मेक इट स्ट्रॉन्गर. तो बोल्स्टर के लिए मैंने आपको लिखा है ना, सपोर्ट. पास्ट टेंस में सपोर्टेड, रीइंफोर्स, पास्ट टेंस में रीइंफोर्स्ड. टू मेक स्ट्रॉन्गर इज टू बोल्स्टर. ऑलराइट. तो ये था वोकैब्युलरी का किस्सा आज का. नाउ वी आर गोइंग टू डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. Of course, this passage I already have done either on Unacademy or on YouTube. I don't remember last year. So the students who are from last year, आप ये already कर चुके हैं. So this will not be useful for you. But of course, the students who are preparing for yes, then giving a concrete, more defined shape, right? Students who are preparing for this year, this is going to be useful for them. This passage, ये है passage, slide 1, 2, 3, 3 slides. Questions क्या है? टोन ऑफ द ऑथर बताना है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टोन्स. उसके आगे क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं. अच्छा, बाय द वे, टोन इज ऑलवेज अ जनरल क्वेश्चन बिकॉज द आंसर कम्स फ्रॉम द पैसेज ओवरऑल. ठीक है, तो आपको जो सबसे ज्यादा दिखे जो टोन, दैट वुड बी द आंसर. अगर आपको, आई विल कंपेयर दैट एंड विल चेक. ओके. Question 2. In para 3, author finds starvation, dehydration, induced euthanasia to be more insidious because. तो ये बहुत specific question है because you know that you have to go to para 3 and answer this one. So you can also skim through the passage, और फिर जब इस क्वेश्चन पे आए तो you can go back and check. वाह, पैरा 3 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया. इन सीरियस का मीनिंग बताना है. सो मे बी वी कैन आंसर क्वेश्चन 3 फर्स्ट बिकॉज ऑफ कोर्स क्वेश्चन 2 इज डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 2 में भी इन सीरियस वर्ड आया है, तो पहले उसका मीनिंग डिस्कस कर लेंगे, बट कॉन्टेक्स्ट से फिगर आउट करना बेहतर है. द ऑथर मेंटेन्स दैट डेथ बाय विथहोल्डिंग केयर इज. नाउ ये भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट लिखा नहीं है कि कहाँ से आएगा ये आंसर. So this can take time when you look for it. Withholding care. पैरा 7 से है आपका क्वेश्चन 5. तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमको पता है कि पैरा 7 में डायरेक्ट जाके चेक कर लो. It's a specific question. Using the passage as a guide, it can be inferred that the author would find euthanasia less objectionable in which cases. This is more of a reasoning kind of a question. Verbal reasoning type का question है. See you later, Tanvir. Take care. The main idea of paragraph 7 is, all right, पूरे पैसेज का मेन आइडिया नहीं, ओनली 7. तो ठीक है, पैरा 7 पे भी काफी क्वेश्चंस आ गए. एंड इन द फाइनल पैरा,
यहाँ पे भी हमको पता है कि कहाँ वापस जाना है, तो वापस जाके हम चेक करेंगे, ठीक है? आर वी गोइंग लाइक लेट्स रीड द पैसेज, स्किम फास्ट, और जितने भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनके लिए वापस जा जाके चेक कीजिए, वो आंसर कीजिए, एंड देन आंसर द जनरल क्वेश्चंस। अच्छा, बट मीनिंग देख लेते हैं। प्लीडिंग इज लाइक बेगिंग, बहुत ही लाइक रिक्वेस्ट, बट थोड़ा इट इज अ स्ट्रॉन्गर वर्ड फॉर रिक्वेस्ट। ब्रैकेट्स में लिखती हूँ, स्ट्रॉन्गर वर्ड फॉर रिक्वेस्ट। आर्ग्यूमेंटेटिव ना यूजुअली स्टाइल के अंदर आता है, टोन के अंदर नहीं आता है। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्टाइल, समथिंग कॉल्ड अ टोन। आर्ग्यूमेंटेटिव इज व्हेन द ऑथर इज टेकिंग अ स्टैंड। अगर क्वेश्चन वन में हमको कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिला और ऑथर स्टैंड ले रहा हो, तो हम आर्ग्यूमेंटेटिव मार्क करेंगे। बट अगर ऑथर स्टैंड ले रहा है पर हमको उससे भी बेहतर ऑप्शन मिल गया, तो हम ये मार्क नहीं करेंगे, बिकॉज दिस मोस्टली कम्स अंडर स्टाइल। ऑलराइट, ऑथर इज टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड। स्टैंड स्टांस, इफ यू रिमेंबर, आज ही किया था। हेलो हिमांशु। Compassionate is it's like sympathy. Compassion is sympathy. When you really have feelings for the problems that people face, you're like you feel bad for them. अरे क्या हो रहा है इनके साथ? That is compassion. It's like sympathy. Emphatic is forceful. It has come from the word emphasis. तो किसी चीज पे emphasize कर रहे हैं तो आपका टोन emphatic हो जाता है, forceful. Empathetic is empathy से आया है, empathetic. तो empathy क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं। empathy, I will need some space here. Empathy is sympathy plus the ability to put oneself in the other person's position or shoes. That's empathy. Alright. ये ऑप्शन देखना जरूरी था। ये क्वेश्चन आप एंड में आंसर करोगे, क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस के लिए यू विल कीप ऑन गोइंग बैक एंड फोर्थ नो थ्रू द पैसेज। तो काफी बार पैसेज देख लेंगे आप तब तक, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दिस वन, विच इज अ मोर जनरल क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स गो थ्रू द पैसेज। कोई पार्ट क्लियर ना हो तो प्लीज आस्क।
Okay, now I am going to read it out aloud, assuming that you might have given it a read by now. बहुत ही यूजफुल पैसेज है, जैसा मैंने कहा ये पहले भी करवाए हैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए. बहुत यूजफुल पैसेज है बिकॉज इट्स अ टॉपिक दैट कम्स अ लॉट इवन इन essay writing. एंड essay writing होता है ना आपका, जस्ट सेकंड आई ड्रॉप्ड माय पेन. essay writing होता है ना, वंस यू क्रैक द एग्जाम तो रिटन एबिलिटी टेस्ट इज essay writing, और ये जीडी में भी बहुत आता है. So by doing this passage, you will get an idea of this topic and you will be able to formulate your own stance and you'll have your own views. So देख लीजिए क्या है. The word euthanasia is of Greek origin and it literally हाँ मतलब एकदम break down करो तो, क्योंकि euthanasia ना मैं आपको बताती हूँ as an English teacher also, EU का मतलब होता है good, और this Thanos जो आप जानते हैं ना, तो this THANO that relates to death. तो इसीलिए लिटरली अगर हम ट्रांसलेट करें इसका मतलब होता है a good death. बट प्रॉपर मीनिंग होता है mercy killing. ऑलराइट, देखिए the American Heritage Dictionary defines it as the act of killing a person painlessly for reasons of mercy. Such killing can be done through active means, उसको कहते हैं active euthanasia by the way, such as giving a lethal or dangerous or poisonous injection, or by passive means such as withholding medical care or food and water. So this is passive euthanasia कि medical care दिया नहीं या फिर food and water नहीं दिया, then also the person will die. Active would be actually कुछ ऐसा injection दिया जिससे the person dies. आगे देखिए, in recent years in the United States there have been numerous मतलब बहुत ज़्यादा cases of active euthanasia in the news. They usually involve the deliberate killing. Deliberate का मतलब होता है intentional, जानबूझकर. एक्चुअली डेलिबरेट का एक और मीनिंग होता है, यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू. They usually involve the deliberate killing of ill or incapacitated persons by relatives or friends who plead. Pleaders who request, who beg that they can no longer bear is to tolerate, bear to see their loved ones suffer. Although such killings are a crime, the perpetrators are the doers, the criminals, the people who have committed the crime. Hmm. Perpetrators are the doers of a crime, the ones who have committed the crime. The perpetrators are often dealt with leniently, मतलब not strictly, by our legal system. तो ऑथर कह रहा है कि हालांकि ऐसे क्राइम्स, ऐसी चीजें, ऐसे किलिंग्स क्राइम होते हैं, फिर भी जो परपेट्रेटर्स होते हैं हमारा सिस्टम उनके साथ लीनियंटली डील करता है, स्ट्रिक्ट नहीं है. And the media usually portrays them as compassionate heroes who take personal risks to save another from unbearable suffering. Media portrays them. ऑथर का व्यू नहीं है. ऑथर का व्यू यहाँ दिख रहा है, देखिए, सच किलिंग्स आर क्राइम. ऑथर कह रहा है, सोचो अगर मैं ऑथर हूँ और मैं कहूँ हालांकि ऐसे किलिंग्स तो क्राइम होते हैं, पर जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है ऐसे क्रिमिनल्स के साथ, और मीडिया भी उनको हीरो की तरह दिखाती है. तो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि वो हीरो है. ऑथर कह रहे हैं मीडिया उनको हीरो की तरह दिखाती है. It's very important to understand the author's point of view. That will help you understand the author's tone, and उसी के basis पे answers होते हैं question. Answer होते हैं question. The seeming acceptance of active forms of euthanasia is alarming, which means it is shocking. देखो author का फिर से आया tone कि ये जो दिखता है जिस तरह से लोग इसको accept करते हैं, it's shocking. But we face a bigger, more insidious threat. ये meaning आपको figure out करना है, मैं नहीं बताऊंगी. It relates to a question, no? So once you do the question, then maybe I'll tell you the meaning. But we face a bigger threat from passive euthanasia, passive forms. क्यों? Every year in hospitals and nursing homes around the country, there are growing numbers of documented deaths caused by caregivers withholding life-sustaining care, including food and water, from vulnerable patients who cannot speak for themselves. तो ये ज्यादा खराब है, ऑथर कह रहा है. अच्छा दिख नहीं रहा है ना. cannot के बाद लिखा है, cannot के बाद लिखा है speak for themselves. ऑलराइट, cannot के बाद क्या लिखा है? speak for themselves. ऑथर कह रहा है कि ये तो बड़ा ही खराब होता है यूथनेशिया, पर उससे भी ज्यादा खराब है पैसिव यूथनेशिया, क्योंकि हर साल हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में ग्रोइंग नंबर ऑफ डेथ हो रहे हैं जहाँ पे केयर गिवर्स जो होते हैं वो खाना पानी देना छोड़ देते हैं. किसको छोड़ देते हैं खाना पानी देना? वल्नरेबल पेशेंट्स को, बेचारे कमजोर पेशेंट्स को, हु कांट इवन स्पीक फॉर देमसेल्व्स. ऑलराइट, ओके, कुछ डिफिकल्ट था क्या यहाँ?
Insidious तो क्वेश्चन आएगा तब आपको ट्राई करना है, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग द मीनिंग. ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड. So second slide, assuming that you must have read it by now. While it is illegal to kill someone directly, for example with a gun or a knife, in many cases the law has put its stamp of approval. In many cases the law has put its stamp, मतलब law approves. तो इलीगल है कि किसी को गन या नाइफ से मारना, पर ये चीज को बहुत केसेस में लॉ ने अप्रूव कर दिया है कि ठीक है, किस चीज को, omitting needed care, not giving care required to those patients. पर वो भी तो एक तरह का killing है ना. Further, many states have living will laws designed to protect those who withhold treatment. Oh. And there have been numerous court rulings which have approved of patients being denied care and even starved and dehydrated to death. Because such deaths occur quietly within the confines of hospitals and nursing homes, they can be kept hidden from the public. Most euthanasia victims are old and or very ill, so their deaths might be attributed to a cause, other than the denial of care that really kills them. I think it's very clear now, simple language. Further, it is often relatives of the patient who request that care be withheld, मतलब care रोक दिया जाए. In one court case, the court held that decisions to withhold life-sustaining care may be made not only by close family members but also by number of third parties. A number of का मतलब होता है many. And that such decisions need to be reviewed by judicial system if there is no disagreement between decision makers and medical staff. Okay, need not be reviewed. Need not be reviewed. अगर डिसीजन मेकर एंड मेडिकल स्टाफ इज ओके तो ठीक है, वो डिसीजन चलेगा. जस्टिस सिस्टम को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, रिव्यू करने की जरूरत नहीं. द कोर्ट वेंट सो फार एज टू रूल दैट अ नर्सिंग होम मे नॉट रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, मे नॉट रिफ्यूज यानी कि अग्री टू पार्टिसिपेट इन फेटल विड्रॉल ऑफ फूड एंड वाटर फ्रॉम इनकॉम्पिटेंट पेशेंट. अ नर्सिंग होम मे नॉट रिफ्यूज का मतलब होता है अग्री, may agree to participate in fatal withdrawal of food and water from incompetent patient. Incompetent is incapacitated, जो खुद कुछ ना कर पाए. लास्ट देखिए, extraordinary or heroic treatment need not be used when the chance for recovery is poor. समझे कि रिकवरी का चांस कम है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रीटमेंट यूज करने की जरूरत ही नहीं. And medical intervention would only prolong the dying process. Prolong is, make it longer, increase the time, make it longer in terms of time. But to deny customary and reasonable care, customary is something which is obligatory, mandatory.
But to deny customary and reasonable care or to janbujhkar deliberately starve or dehydrate someone because he or she is very old or very ill should not be permitted. ये हमारे author का stance है. Most of the cases coming before the courts do not involve withdrawing heroic measures from imminently dying patients. Imminently is बस अभी होने ही वाला है, immediately, about to happen. Imminent is about to happen. But rather, they seek approval for denying basic care such as giving food and water, administration of food and water to people who are not elderly or terminally ill, but who are permanently incapacitated. Incapacitated is one who cannot do anything. These people could be expected to live indefinitely, though in an impaired state, if they were given food and water and even minimal treatment. So ऐसे ही cases कोर्ट के पास आते हैं. No one has the right to judge that another's life is not worth living. The basic right to life should not be abridged. Okay. Because someone decides that someone else's quality of life is too low. If we base the right to life on quality of life standards, there's no logical place to draw the line. How do you decide? Right? मतलब ऑथर कह रहा है कि अगर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अरे ये इनकेपेसिटेटेड है तो उसका लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है तो मार दो. तो यहाँ पे वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? आई मीन फिर तो आप किसी की भी लाइफ को कह सकते हो वर्थ लिविंग नहीं है. वेयर इज द लॉजिक देयर? मे बी जो इनकेपेसिटेटेड है दैट पर्सन स्टिल वांट्स टू लिव. आगे लिखा है टू protect the vulnerable patients, the weak ones, the incapacitated ones, the ones who can't really themselves can't do anything. We must foster more positive attitude towards people with serious and incapacitating illnesses and conditions. Despite the ravages of their diseases, they are still our fellow human beings and deserve our care and respect. We must also enact positive legislation that will protect such vulnerable people from those who consider their lives meaningless or too costly to maintain, and who would cause their deaths by withholding life-sustaining care such as food and water. यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है? Life के बाद life-sustaining care such as food and water. Such as food and water. That's what it says. Now the question. First up, end में भी try कर सकते हैं. We should start with the third one. In paragraph 3, the synonym of insidious. क्या मतलब होता है? किसके बारे में बात हो रही है? देखिए, the seeming acceptance of forms of euthanasia is shocking, but we face a bigger, more insidious threat from passive euthanasia. So definitely a very negative word. It can't be mischievous. Mischievous मतलब naughty. So it can't be naughty threat. Treacherous हो सकता है. Apparent is clearly visible. Cumulative is added up. Seductive is something that attracts us to itself. In a way, attracting. Attractive नहीं, attracting. And treacherous is deceptive. जैसे जो धोखा भी दे, deceptive. तो बताइए what should be your answer for the third one? Yes, it should be treacherous. Correct. अच्छा, insidious का literal meaning क्या होता है? Literal meaning something extremely bad. Which grows in a secretive manner. So that it's difficult to detect. Stealthy होता है, secretive होता है, तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. कोई चीज जो धीरे धीरे, जैसे कि करप्शन भी आप कह सकते हो. इंसीरियस करप्शन मतलब बहुत खराब चीज है, धीरे धीरे ग्रो करती है, हर जगह फैल जाती है, पर जल्दी से दिखती नहीं है और हाथ में नहीं आती है. So that is what insidious is. Alright.
Okay, the answer for the second one, the author finds starvation and dehydration induced euthanasia to be more insidious because why? आंसर दिया है पैसेज में why. The answer is given here, para 3 देख लीजिए. We face more insidious threat from passive euthanasia because every year in hospitals, there are growing number of documented deaths caused by caregivers withholding life-sustaining care, including food and water, from vulnerable patients who cannot speak for themselves. तो ये reason है. That's why it's more insidious. C, right. It involves those who cannot protest. Direct question है तो अपना नहीं सोचना है, वहीं पे वापस जाके चेक करना है. ठीक है, लिखा है ना, इट्स फ्रॉम, इट इज डन टू vulnerable patients. Vulnerable are weak, कमजोर बेचारे, who can't even, who can't speak for themselves, so they cannot protest. Very direct answer. Second हो गया, third हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 का लिखा नहीं है वेयर डज इट कम फ्रॉम, सो ऐसे क्वेश्चन को आपको होल्ड पे रखना चाहिए. दूसरा अटेम्प्ट कर लो, दूसरों के लिए, जैसे फिफ्थ सेवेंथ पैरा में जाएंगे, इस पैरा में, उस पैरा में. So because we'll revisit the para quite a few times, we'll be in a better position to answer question number 4 and question number 1 later. 4 में भी पैराग्राफ नंबर नहीं दिया है ना, तो इसलिए उसको होल्ड पे रखिए. ये स्ट्रैटेजी आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है, या फिर अगर आपको एग्जैक्टली याद हो कि कहाँ पे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट याद अगर ना हो तो मीनवाइल अब्रिज्ड का डेफिनेशन बताइए, पैरा 7 से आया है. और मे बी यू कैन गिव मी अ शैडो आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए. पैरा 7 अब्रिज्ड देखिए. नो, यहाँ देखो, यहाँ से शुरू करो. नो वन हैज द राइट टू जज दैट अनदर्स लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. द बेसिक राइट टू लाइफ शुड नॉट बी अब्रिज्ड because somebody decides that someone else's quality of life is too low. ठीक है, basic right to life should not be, like reduced or cut down. Reduced or cut down, cut down, reduced, कि मार दिया तो ऑफकोर्स ना, स्पैन ऑफ लाइफ कम हो गया. ठीक है, तो लेंथेंड नहीं होगा, एक्सटेंडेड नहीं होगा. कॉम्प्रेस उसके लिए यूज नहीं होगा. ट्रिम आप हेयर को करते हो, curtailed, curtailed, reduced, cut down, stopped, that's the word, curtailed. लिख लीजिएगा curtail का मतलब. ट्रिमिंग क्यों नहीं होगा? ट्रिमिंग also means to cut, but to be honest, literal meaning of trimming तब होता है when you cut an excess of something. क्योंकि जब आप अपने बालों का ट्रिम कराते हो तो आप उस समय कंसिडर कर रहे हो कि जो जो आप ट्रिम करा रहे हो उसके अलावा जो बाल है वो एक्सेस में है, या वो खराब हो चुका है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट. आप जब एक ट्री का ट्रिमिंग करते हो या एक प्लांट का ट्रिमिंग करते हो तो आप वो पार्ट्स हटाते हो जो अनवांटेड है, सो ट्रिमिंग वुड नॉट फिट इन हियर. वैसा यहाँ पे कटिंग शॉर्ट ऑफ वंस लाइफ, स्टॉपिंग इट, सो इट्स curtail. ऑलराइट, कटिंग द ड्यूरेशन. देखते हैं सिक्स. यूजिंग द पैसेज एज अ गाइड, इट कैन बी इन्फोर्ड दैट द ऑथर वुड फाइंड यूथनेशिया लेस ऑब्जेक्शनेबल in which cases. Sixth one. What do you think? यहाँ पे you can't go back. You need to know the author's attitude and then take a call. ऑथर का एटीट्यूड कुछ ये है कि देखिए, अगर आपने पूरा पैसेज देखा हो, ऑथर इज वरीड अबाउट पीपल हु कांट टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, हु आर इनकेपेसिटेटेड, हु आर वल्नरेबल, राइट. तो उनके लिए उसको टेंशन नहीं है जो अपने लिए स्टैंड ले सके.
फॉर द सिक्स्थ वन, ये देखिए, एक्चुअली पैसेज में भी एक जगह लिखा है इमिनेंट वाला पार्ट। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस कमिंग फ्रॉम कोर्ट्स डू नॉट इन्वॉल्व हेरोइक मेजर्स फ्रॉम इमिनेंटली डाइंग पेशेंट। तो वो उनके लिए टेंशन में नहीं है जो मरने ही वाले हैं, उसको टेंशन है कि जिनका लाइफ लंबा चल सकता था बट किसी और को लगा कि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं है तो मार दिया, उसके लिए ऑथर को टेंशन है। तो जो अभी मरने ही वाला है उसके लिए टेंशन नहीं है, तो वन होगा। ही वुड फाइंड इट लेस ऑब्जेक्शनेबल इन केस ऑफ वन। पेशेंट ने इंस्ट्रक्शंस छोड़े हैं यानी वो इनकेपेसिटेटेड नहीं था, खुद का डिसीजन लिया, तो टू भी होगा। पेशेंट खुद ही रिफ्यूज करता है तो एक्सेप्ट नरिशमेंट, तो थ्री भी होगा। आंसर इज 1 2 and 3। इन केसेस में उसको लेस ऑब्जेक्शनेबल लगेगा बिकॉज द पेशेंट हैज बीन एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और इमिनेंट वाला भी पॉइंट डिस्कस हुआ है। Main idea of para 7, last two questions that we see here, is that main idea of para 7. So you'll have to actually go to para 7 and check which is para 7. ये हो गया 3 4 5 6 7, ये वाला, ये आपका लास्ट पैरा है यहाँ से यहाँ तक। 7 ये हो जाएगा नो वन से लेके लाइन तक। नो वन हैज द राइट टू जज दैट अनदर्स लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। द बेसिक right to life should not be shortened because someone decides that someone else's quality of life is too low. If we base the right to life on quality of life standards, there's no logical place to draw the line. Like, it's very subjective. So, there's no, quality of life के basis पे अगर decide करें कि euthanasia होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो there's no logical line to be drawn, no. मतलब मेरे हिसाब से होगा कि अच्छा, या एक्स के हिसाब से होगा अच्छा, जो अ, जो चल नहीं पा रहे हैं उनका वर्थ लिविंग नहीं है लाइफ। वाई कहेगा नहीं, जो बहुत गरीब है उनका वर्थ लिविंग नहीं है लाइफ। जी कहेगा नहीं, जो जो अब जिसका यादाश्त हो गया उनका वर्थ लिविंग नहीं है। तो ये तो बहुत ही रैंडम हो जाएगा ना। व्हाट इज द लॉजिक, लाइक हु डिसाइड्स कि विच लाइफ इज वर्थ लिविंग एंड नॉट। तो मेन आइडिया यही है कि ये बड़ा ही देयर इज नो प्रॉपर लॉजिक टू इट, there's no proper measurement. How do you decide? Where do you draw the line? So using a subjective standard will make the decision to end an individual's life arbitrary. Arbitrary is random. And subjective is something which is, it depends. मेरा सोच अलग, आपका सोच अलग, थर्ड पर्सन का सोच अलग। तो क्या फिर किसी को भी मार के चलेंगे? How would it work? The eighth one, the final para. In the final para, the author writes, despite the ravages of their disease, they are still our fellow human beings and they deserve our care and respect. तो यहाँ आपको चेक करना है, राघव is saying 7 is E, justify an earlier statement. तो यानी कि इसके पहले जो स्टेटमेंट आया वो भी कह रहा है कि हमको like they deserve our care and respect, we should take care of them. अगर E आंसर है तो earlier statement would also say something positive. Object to a larger idea, गेम से और लेटर स्टेटमेंट, यानी उसके बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है उसको गेम से करना। बाय द वे, गेम से का मतलब जरूर लिख लो, कॉन्ट्रडिक्ट। Illustrate an example. B, to be honest, B मुझे लग ही नहीं रहा है कि it can, I mean, जो सेंटेंस दिया है despite the ravages, it's not really any example that has been shown. कोई particular example तो है नहीं। Prove a previous argument. I think no, it's not proving anything. It's actually just taking a a stand कि हाँ ये सही है या नहीं ये नहीं सही, whatever. तो देखते हैं उसका जस्टिफाई एन अर्लियर स्टेटमेंट या गेम से और लेटर स्टेटमेंट चेक करते हैं। क्या लेटर स्टेटमेंट उसका ऑपोजिट है या अर्लियर स्टेटमेंट इज सिमिलर टू व्हाट इट सेज। Earlier statement, to protect vulnerable patients, we must foster positive attitude. Despite the ravages, they are still our fellow. Yeah, it is justifying an earlier statement. We must also enact positive legislation. It is justifying a later statement also. So it's not gainsaying a later statement. It's not contradicting a later statement. So it cannot be C. You're right, Raghav. It is E. Elephant is the correct answer. Perfect. चलिए अब हमारे दो क्वेश्चंस बचे हैं। The fourth one, author maintains that death by withholding care is. What should it be?
So maybe check करना पड़ेगा. Is it mainly only happening in hospitals? Is it happening for terminally ill patients mainly? It is often requested by family members. It is approved by living wills. नहीं ये तो नहीं होगा. Approved by living wills होता कि खुद ही will में लिखा है तो author को इतना problem नहीं होता इस चीज़ से. Difficult to prove if prosecuted. We'll have to check. But that's the thing with these questions कि अब कहाँ पे check करेंगे आप. यहाँ से शुरू करना है third para से and then further you'll have to skim through it to answer this one. देखिए, it is often relatives of the patient who request that care be withheld. Uh, so yeah, it should be C. Approved by living wills नहीं होगा. Largely confined to terminally ill नहीं होगा because even people who are incapacitated उनके केस में भी हो रहा है. और ऑथर ने कहा है they might live indefinitely, बहुत लंबा वो जी सकते हैं, फिर भी उनके केस में हो रहा है तो B भी नहीं होगा. Difficult to prove if prosecuted would be a guess of ours because खुद it's already mentioned कि courts ने ही वो अलाउ किया है कि इट कैन बी डन. तो इसमें प्रूव करने ना करने की बात ही नहीं आती है. कोर्ट्स ने तो अलाउ कर दिया है कि इट्स ओके, यू कैन डू इट. मेनी पीपल हैव द राइट ऑफ डूइंग दिस. फैमिली मेंबर्स, थर्ड पार्टीज. तो वो पॉइंट ही नहीं आ रहा है कि प्रूव नहीं हो पाएगा. शायद प्रूव हो भी जाएगा पर कन्विक्शन नहीं होगा. मतलब इट विल बी इजली प्रूव्ड because it's allowed by law, but then the person will not be punished because it's allowed. तो इसलिए ई नहीं होगा. फर्स्ट देखिए, द टोन ऑफ द ऑथर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज pleading नहीं है. The author is not begging. The author is not putting himself or herself in the position of euthanasia and feeling what the the incapacitated person might feel. तो empathetic भी नहीं है. It's more of compassionate क्योंकि author is sympathizing with those people. कि और compassion में ये होता है कि आप sympathize करते हो इस level का that you want to relieve them of their misery. मैंने कहा था कि अगर कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा देन वी कैन गो विद आर्ग्यूमेंटेटिव, बट बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ स्टाइल दैन अ टोन. इसलिए अगर कुछ बेहतर नहीं मिलता पर बेहतर मिला, कंपैशनेट मिला है. और आपको हर पैरा में कंपैशन दिखेगा. सबसे बड़ी बात ये है हर पैरा में दिख रहा है कि ऑथर फील्स बैड फॉर दीज पीपल. उसके लिए टर्म यूज किया है इनकैपेसिटेटेड पीपल, वल्नरेबल पीपल. तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपैशन. राइट, इसलिए आपका आंसर ऑफ द फर्स्ट वन इज ओके. सो दैट इज इट फॉर नाउ. आज हम लोग रात के 11 बजे यूट्यूब पे नहीं पढ़ रहे हैं. आज हम लोग रात के 11 बजे पढ़ रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ जो आप इफ यू ऑलरेडी हैव डाउनलोडेड इट ब्रिलियंट. इफ यू हैवंट देन प्लीज डाउनलोड इट एंड यू कैन यूज द कोड शर्मा जी एंड अनलॉक द फ्री स्पेशल क्लासेस. तो रात के 11 बजे आज फ्री स्पेशल क्लास है ऑन अनअकैडमी. ऑलराइट, स्पेशल क्लास इट्स फ्री. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं आपको सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताती हूँ. वी हैव द आइकॉनिक एंड द प्लस कोर्सेज फॉर यू. इन प्लस यू गेट लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस. आइकॉनिक में क्या क्या मिलता है आप देख सकते हैं यहाँ. दीज आर द प्राइस पॉइंट्स. यू कैन go for any of these subscriptions. Use the code Sharma Ji, get 10% off. And these are the price points of Iconic. Again, you can use the code Sharma Ji and get 10% off. Abhi ke liye, I will sign out. I will see you tonight at 11 p.m. Like I said, on Unacademy Learning.
free special class. Apart from that, 9 p.m. पे plus class भी है. Alright guys, take care. Have a good day.